Sitaram Yechury is a huge loss, not only for CPM, but for the entire communist left movement in our country. He was one of the outstanding leaders of the communist movement in the contemporary period of our country. And he was a great orator, prolific writer. He was an ideologue, intellectual, and he was in the student movement. I was in youth movement. We worked together. He came to CPM party leadership. I came to CPI party leadership, and we worked together on multifarious issues in order to protect the interests of the country and people. Then he became the general secretary of the party. I became the general secretary of my party, CPI. We put all our efforts together to strengthen the left communist movement in our country. He was in parliament. I was also in parliament with him. He was an able parliamentarian. Both of us used to coordinate in order to articulate the concerns of the people in parliament. Today, we lost him, and his loss is a great loss for the communist movement, for the country as a whole. And on behalf of my party, on behalf of myself, I pay our solemn homage and deep condolences. As a jolt, not just to the party he represented, but to Indian politics. His going away is a loss to the ideological journey of his own party and the country's politics also. I think it won't be an exaggeration if we say that he was a conscience keeper of sort for Indian politics. May he travel well. He'll be missed. He'll be missed by all of us. He's a thorough gentleman. He had unwavering conviction, and the value system which Mr. Yechury followed will always remind the generations to come of how to conduct oneself in the rough and tumble of Indian politics. You'll be missed, Sitaram ji. क्या कहूँ, आप ये सवाल पूछ रही हैं, आपसे पहले ये खबर हमें मिल गई थी उनके जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वहाँ से। अनबिलीवेबल है, समझ में नहीं आ रहा है। कॉमरेड येचुरी बनना, कॉमरेड येचुरी जैसा करना बहुत मुश्किल है। बीते 4 दशक को देखिए, हिंदुस्तान के समकालीन राजनीति में कोई भी बात, कोई अध्याय उनके बगैर पूरा नहीं होता। वर्किंग क्लास का एक हीरो जो हर वक्त, अभी कुछ हफ्तों पहले मुलाकात हुई थी, अब आगे क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ये इश्यूज पे काम करना होगा। हर व्यक्ति टूट सा गया ये सुन करके। अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का फोन आया, खुद बता रहे थे कितना लंबा एसोसिएशन है। हमारे यंग लीडर एलओपी तेजस्वी जी का, हर किसी को छुआ उन्होंने। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जब वो बीमार पड़े, ये किताब उन्होंने ही दी थी मुझको, बायोग्राफी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। बड़ा रेंज पढ़ने का, सोचने का। किसी भी मृत्यु के बाद वैक्यूम भरना आसान नहीं होता है। कॉमरेड सीताराम येचुरी के इस देहावसान के बाद तो और भी मुश्किल है। कल्पना ही नहीं आप कर सकते, यकीन ही नहीं हो रहा अभी भी। इतना ही कह सकता हूं, लाल सलाम। तो सीताराम येचुरी जी का जो निधन हो गया है, ये सीपीआईएम के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है, और उससे भी इस देश की वामपंथी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा एक नष्ट है। क्योंकि आज देश में जो हालात है, जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस आज सत्ते पे है, और हमारी संविधान को भी पूरा खत्म करके इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास में ये सत्ते में बैठने वाला जो ताकतें और उनको चलाने वाला आरएसएस भी कोशिश करने का इस जमाने में
उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ती थी वामपंथी आंदोलन और अन्य डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टियां मिलके, तो उस वक्त ऐसा एक प्रोमिनेंट लीडर का के निधन होना बहुत बड़ा एक धक्का उस प्रयास के ओर पे हो रही है। और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, इस देश का प्रोग्रेसिव सेकुलर फोर्सेस को भी, तमाम संगठनों को भी साथ लेके ये लड़ाई लड़ना है करके एक समझ कॉमरेड का था। तो इसलिए भी पूरी देश की जन आंदोलन के लिए बहुत इंस्पिरेशन था। तो अभी तो ऐसा जाना अभी बहुत बड़ा धक्का है। Comrade Sitaram Yechury passed away few minutes back. He was suffering from pneumonia and serious infection, and he was admitted in All India Institute of Medical Science, and he fought heroically against the disease, but after 10 days ultimately he had to succumb to this disease. Now after his death, it is a very, very great loss for communist movement of this country, for the left movement of this country, and for the democratic movement of this country. Because he was the strongest voice of democracy, secularism, unity and integrity of the country. And whenever this challenge came to our constitution, to our democracy, he was the loudest voice against that. And he has a very close relation with all political leaders personally, because he was loved by all political leaders, and he used that personal capacity to mobilize all the political parties and political leaders. All personally he was interested, he was very capably mobilize all the political leaders, and his contribution in building the unity India, this new platform of democratic forces, his contribution will be remembered. And his death is a great loss to the country, to the democratic movement, to the secular movement, to the unity and integrity of this country. And definitely Communist Party and Left Party lost one of the greatest leader of this century.